Hello everyone, welcome back to the bioquery series of nucleotides biology discuss. And today we will to continue from the genetics, and this is your bioqueries for the genetics lecture number 2. Okay, and in this lecture we are going to discussing about the some of the question related to the post Mendelian concept. Post Mendelian concept related किछटा में MCQ series discuss karma. So let's discuss about this. The first question: what is the term for the expression of both the alleles? आमे जदि कहला क्वेश्चन रे देला जे बोथ एलेली जदि एक्सप्रेशन करूछन बेले ताके हमें काना करूछन जते बेले हमें देखते ना कोडोमिनेंस सोर कर जदि कोडोमिनेंस रे काना होतला जते बेले रेड हॉर्न कैटल आउ हमर व्हाइट कलर सॉरी रेड कलर कैटल आउ व्हाइट कलर कैटल जते बेले हमें क्रॉस करूथना नेक्स्ट जनरेशन रे हमर काना होतला रोन वेराइटी आस्तला रोन वेराइटी रे काना होतला व्हाइट भी एक्सप्रेस होतला रेड भी एक्सप्रेस होतला माने रेड रो भी एलेली एक्सप्रेस होतला व्हाइट रो भी एलेली एक्सप्रेस होतला तो हमर से के क्वेश्चन में काम बोली दैट इज कॉल्ड योर कोडोमिनेंस बोली क्वेश्चन सो दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर द कोडोमिनेंस जदि दुही एलेली एक्सप्रेस होचन ताके कहै से काम बोली कोडोमिनेंस बोली कहै छै क्वेश्चन नंबर 2 इन ह्यूमन ब्लड टाइप व्हिच पेयर ऑफ एलेली इज कोडोमिनेंट हमर ह्यूमन रो ब्लड टाइप जेतले देखुतिला से हमर केन एलेली जेंटा कि हमर काना शो करसी दैट शोज द कोडोमिनेंस ए और बी एलेली माने आईए और आईबी एलेली दे शोज द कोडोमिनेंस जेते बेले आईए और आईबी दुहिटा एका संगे प्रेजेंट थिसन से टाइम रे हमर काना हेसी एबी ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन हेसी जेंटा कि शो करसी कोडोमिनेंस सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ए और बी दुहिटा हमर जदि एका संगे प्रेजेंट थिबे तो एबी एक्सप्रेशन हेसी कोडोमिनेंस शो करसी क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द फेनोमेनन where a single gene influences multiple traits यदि सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर शो करूचे वन कैरेक्टर के रेगुलेट करूचे पहले ताके कहै छै काम बोले कि ताके कहै छै प्लियोट्रोपी हमें प्लियोट्रोपी पढ़ितला गुटे जीन दैट विल शो और दैट विल रेगुलेट मोर देन वन कैरेक्टर ताके कहै छै प्लियोट्रोपी बोली कहै छै जेंदा कि हमें पाइजन साटिबम रो सीड रो जेन लगी जेन जीन अछि सीड रो शेप एज वेल एज हमर स्टार्च बंचिंग एंजाइम जेन फॉर्मेशन अछि सता रिलेटेड गुटे प्रॉब्लम हमें डिस्कस करिथिला जाके कहै प्लियोट्रोपी बोली कहै छै question number 4 in which type of inheritance do alleles shows blending केन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस रे दुही एलेली ब्लेंडिंग शो करसन माने काना जे दुही एलेली मिसी करे ब्लेंडिंग माने काना मिसी जे बाटे को कहसन दुही एलेली मिसी करे गुटे नुवा फिनोटाइप शो करसन जेंता कि हमें देखुतला मिराबिलिस जालपा केसरी तेतले रेड कलर फ्लावर वैरायटी और व्हाइट फ्लावर वैरायटी के क्रॉस करसु हमें काना पैसु पिंक पैसु जेंटा कि हम रेड और व्हाइट के मिसै देले काना पैता पिंक पैता तो सदा के क्वेश्चन काम लिख दैट इज कॉल्ड योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन what is the term for the situation where two or more gene affects a single trait single character or single trait के दे के रेगुलेट कर सकते two or more than two gene okay more than two gene or two gene जदि गुटे character के रेगुलेट करे सी ताके कहै polygenic inheritance जेंदा कि a b c ओके a b c तीनटा जीन जिन माने कि हमर बॉडी रो स्किन कलर के रेगुलेट करसन तीनटा जीन ओके थ्री जीन और मोर देन टू जीन they regulate the single character which character skin color that is called as what polygenic inheritance poly माने बहुत सारा जेनिक माने जीन बहुत सारा जीन they will regulate the single character ताके क्वेश्चन में polygenic inheritance okay in epistasis what is the gene that marks the expression of another gene epistasis गुटे कांसेप्ट पढितला जे हमर गुटे जीन काना करबा आ गुटे जीन रो इफेक्ट के मास्क कर देबा और हाइड कर देबा एंड जेन जिनटा आरो जिन रो एक्सप्रेशन के हाइड करसी और मास्क कर देसी ताके कहसी एपिस्टैटिक जिन और जेन जिन रो एक्सप्रेशन है नहीं पारे ताके कहसी काम लिखि हाइपोस्टैटिक तो हमरा क्वेश्चन আছে इन एपिस्टासिस व्हाट इज द जीन दैट मार्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन के मास्क करसी से जीन के कहसी काम लिखि दैट इज कॉल्ड योर एपिस्टैटिक जीन हमें देखुतला कहार केस रे माइस केस रे तार बॉडी कलर के देखुतला राइट Next is which phenomenon involves the interaction of multiple genes to produce a continuous variation of the traits. Okay, देखो which phenomenon involves the interaction of multiple genes. बहुत सारा gene रो involvement रहुचे. Okay, and produce continuous variation of the traits. बहुत सारा बने traits रे और से character small variation होतुबा. जेंदा कि हमें body color देखुतला body color रे हमर गुटे ऐसे dark brown color और डार्कर कलर ऐसी देन लाइट ब्राउन कलर ऐसी देन हमर मुलाटो कलर ऐसी देन कलर माने अच्छे कलर ना स्लाइटली वेरिएशन करसन
तो हमर बहुत सारा जीन जदी गुटे कैरेक्टर के रेगुलेट करथबा स्लाइटली वेरिएशन शो करथबा एंड ताके को ऐसे काम बोली कि दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोली कि क्वा जेसी। नेक्स्ट, what is the term for the occurrence of more than two distinct phenotype for a gene? गोटे जीन रो लागि जदी मोर देन वन फिनोटाइप आसुचे ताके को जेसी काम बोली कि दैट इज योर प्लियोट्रॉपी। Next question. In multiple allelism, how many alleles does a gene have in a population? गोटे population रे multiple allelism जदी शो करूचे तो सना हमर से जीन रे केते एलेली थिबा। ओके, पॉपुलेशन कथा कहै छै। पॉपुलेशन जदी देखमा मोर देन 2 एलेली थिबा, बट गोटे सिंगल इंडिविजुअल जदी कोइ थिता बेला दुटा एलेली थिता। गोटे सिंगल इंडिविजुअल रे गोटे जीन रो दुटा एलेली, बट मल्टीपल एलेलिज्म जदी से शो करूचे से पॉपुलेशन रे जदी देखमा से नंबर मोर देन 2 एलेली देखबार के पेमा जेंता कि हमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मोर ब्लड ग्रुप हला सपोज बी ब्लड ग्रुप, तो मोर पाखे एलेली काना थाई पारे, सपोज मोर पाखे एलेली अछि आईबी आईओ, राइट। बट जदी मोर सामना रे आउ जने जदी पर्सन अछि सतार ब्लड ग्रुप पचराला जेन तोर ब्लड ग्रुप काना ए ब्लड ग्रुप बेला, मोर पाखे काना अछि आईबी आईयू, सतार पाखे काना अछि ए ब्लड ग्रुप माने काना ही पारे आईए आईओ ही पारे। तो मोर देखो सतार नो आईए रहला, मोर पाखे आईबी रहला, आ गुटे काना अछि आईओ अछि, तो केतेटा एलेली हला दुई जन को मिसे देला तीनटा एलेली हला, बट मोर पाखे केतेटा एलेली अछि दुईटा, बट पॉपुलेशन जदे देखु छ से पॉपुलेशन रे केतेटा एलेली अछि मोर देन 2 एलेली अछि, ताके क्वेश्चन में मल्टीपल एलेलिज्म वाली क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, इन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस व्हिच क्रोमोसोम कैरीज द मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड जीन्स? देखो हमर एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम ऑटोसोम माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम देला सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस माने का कैन से बी कैरेक्टर जदी इनहेरिट होचे थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम ताके क्वेश्चन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट। तो हम जदी इनो कहचे व्हिच क्रोमोसोम कैरीज मोस्ट ऑफ द सेक्स लिंक्ड जीन्स, अधिका जीन्स किन क्रोमोसोम रे थिबा एक्स क्रोमोसोम रे या फिर वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम रे तो नहीं था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या फिर माइटोकॉन्ड्रियल क्रोमोसोम रे नहीं था जेहेतु सेक्स लिंक्ड कहचे माने सेक्स क्रोमोसोम रे थिबा। एने नंबर पाके केतरा सेक्स क्रोमोसोम अछि दुईटा, गुटे एक्स क्रोमोसोम आ गुटे वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इज द लार्जर क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इज अ वेरी स्मॉलर साइज क्रोमोसोम, सो दैट अधिका सेक्स लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट थिबा किन क्रोमोसोम रे दैट विल बी इन द एक्स क्रोमोसोम। Next, in mitochondrial inheritance, from whom is the mitochondrial DNA primarily inherited? Mitochondrial inheritance जदि होची, mitochondrial inheritance माने का? If you see the mitochondria, inside the mitochondria there is presence of DNA. Okay, तो सेन DNA अछि, सनोजन जीन प्रेजेंट अछि ताके हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA और माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स बोली कि कहमा माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स ता केनो इनहेरिट हेसी मोर नेके माइटोकॉन्ड्रिया जेन आइछे कहार माइटोकॉन्ड्रिया आइछे, ओके माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर मदर रू आइछि, सब बोले माइटोकॉन्ड्रिया टा और साइटोप्लाज्म टा केनु ट्रांसफर हेसी मदर रू ट्रांसफर हेसी, राइट। जेतु मदर रो माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर हेसी तो आमे माइटोकॉन्ड्रिया रो जेन हमर माइटोकॉन्ड्रिया जेन डीएनए अछि से डीएनए टा हमर केनु होइछि मदर रो होइछि, दैट इज नॉट कम फ्रॉम द फादर, दैट इज ओनली कम फ्रॉम द मदर, बिकॉज़ हमर साइटोप्लाज्म हमर जेन जाइगोट बनुछि से जाइगोट रे जेन साइटोप्लाज्म थि कहार साइटोप्लाज्म थि ओभम रो साइटोप्लाज्म थि सेतरे हमर स्पर्म रो साइटोप्लाज्म नै थे, एंड साइटोप्लाज्म रे काना थिसी माइटोकॉन्ड्रिया थिसी एंड माइटोकॉन्ड्रिया रे काना अछि डीएनए अछि, राइट। तो हमर माइटोकॉन्ड्रिया जेन डीएनए अछि माइटोकॉन्ड्रिया अछि साइटोप्लाज्म ता कहार साइटोप्लाज्म है ओभम रो साइटोप्लाज्म है, ओभम ता कहार है हमर मदर रो, so that mitochondrial DNA that will only inherit from the mother not from the father. Okay, what is the term for the phenomenon where environmental factors influence the gene expression? जीन रो एक्सप्रेशन काना हबा दैट इज रेगुलेटेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, जदि एनवायरमेंट से नो ताके रेगुलेट करूचे माने ताके कहैसी एपिजेनेटिक्स, ताके कहैसी काम लिखरी एपिजेनेटिक्स, another new term you can remember this. Next, in which type of inheritance does the phenotype of the heterozygote different from the both the homozygotes? देखो दुईटा होमोजाइगस इंडिविजुअल नला नेक्स्ट जनरेशन रे पहला हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल से हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल टा दुही पेरेंट रो वेरी करूची, दुही पेरेंट रो वेरी करूचे ना पेरेंट 1 आसुचे ना पेरेंट 2 आसुचे, काना आसुचे गुटे नोआ फेनोमेनन आसुचे नोआ फेनोटाइप आसुचे बेले सेटा केने देखबार के मिलसी दैट इज सीन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज सीन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस रे जले कि रेड वैरायटी व्हाइट वैरायटी नला पिंक आसला, पिंक टा ना रेड संगे समान है ना पिंक टा व्हाइट संगे समान है, तो इदके कोइसे काम लिखरी दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर लिखरी कोआ जैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द कंडीशन where the organism has 3 copies of a chromosome instead of 2?
गोटे कंडीशन जेना कि क्रोमोसोम टा दुईटा रहबा जगह केतरा আছে तीनटा আছে से कंडीशन के कहै का बोली कि ट्राइसोमी बोली कि कहै छै जेंटा कि हमें डिस्कस करतला रिसेंटली एनुप्लॉइडिजन डिस्कस करतला से टाइम रे डिस्कस करतला ट्राइसोमी कंडीशन जेना कि 2n+1 कंडीशन देख पर के मिलसी जेंटा कि कहै छै वन ऑफ द एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हला क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हला दिस आर ड्यू टू द ट्राइसोमी नेक्स्ट क्वेश्चन in X inactivation what is formed as a result of one X chromosome being randomly inactivated in female देखो काना कहला X chromosome female case रे जुड़े X chromosome थिसी but one of the X chromosome that is normal X chromosome and other X chromosome that is called as inactive X chromosome दुई X chromosome active ना थे गोटे एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमाटिन कंडीशन रे थिसी आरो एक्स क्रोमोसोम मोस्टली हेटेरोक्रोमाटिन कंडीशन रे थिसी जहां के क्वाइस कामल की बार बॉडी बोली की क्वाइसी एंड से क्रोमोसोम रे जीन माने जेन प्रेजेंटेशन दे आर इनएक्सप्रेस कंडीशन रे और एक्सप्रेस नहीं पारुतन ताके क्वाइस बार बॉडी बोली की क्वा जैसी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is an example of a trait controlled by multiple genes and influenced by the environment okay that is controlled by the multiple genes and that is influenced by the environment that is your height our height kana haba that is regulated by more than one gene and that is also influenced by the environment in which we are living जेन environment में रहउछो से environment रे काना मिलुछ हमको खबर लगे केन कंडीशन रे रहउछो that also depend how our height will increase or decrease okay next question what is the term for the failure of homologous chromosome to separate during meiosis meiosis time रे homologous chromosome गोटे साइड के जैसी आउट homologous chromosome आ गोटे साइड के जैसी बट फेल्युअर हे गला गोटे homologous chromosome दुईटा सेपरेट हे नै पारले और दुई chromosome गोटे साइड के पले आसले और किछि प्रॉब्लम हला ताके कहैसी नॉन डिसजंक्शन बोली कि कहै छै ताके कहैसे काम बोली कि नॉन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन रो लागि बोली कि किछरा डिजॉर्डर हमें डिस्कस करथिला म्यूटेशन पल्ला टाइम रे काना काना डिस्कशन करिथिला यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन in which inheritance pattern is the trait expressed only if the individual inherit two copies of the allele काना कथा in which inheritance pattern can inheritance pattern रे the trait expressed केतबेला trait ता express बा only if the individual inherits two copies of the allele दुही allele जदी आसुचे only express ही परबा जदी दुही allele भीतर गोटे allele आसुचे आ गोटे allele जदी अलगा allele आसुचे सना express नै हबा केनते माने एटा काना कहला दुही allele समान थिबा कहला दुही allele समान थिबा एंड दुही allele समान थिले जे कि एक्सप्रेस होचे दुही allele समान थिले जे कि एक्सप्रेस होचे माने एटा केन कंडीशन के बतौचे रिसेसिव इनहेरिटेंस के बतौचे बिकॉज़ रिसेसिव इनहेरिटेंस जदी हेतिबा दुही टा रिसेसिव कंडीशन रे होमोजाइगस कंडीशन रे थिले जे कि एक्सप्रेस हबा but dominant variety जदी देखमा dominant type रो जदी एक्सप्रेशन होतुता पहले dominant variety ता काना हिसी that may express in homozygous condition or that may express in heterozygous condition तो दुहीटा समान थिले भी एक्सप्रेस ही पारसी दुही एलेली समान नै थिले भी एक्सप्रेस ही पारसी केनटा डोमिनेंट इनहेरिटेंस ता बट जदी रिसेसिव इनहेरिटेंस होतबा बेले दुही एलेली समान थिले जे कि एक्सप्रेस ही पारसी तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर दैट इज द रिसेसिव इनहेरिटेंस next question what is the term for the phenomenon where the expression of one gene is influenced by the presence of another gene इनो काना कहला देखो गुटे जीन रो एक्सप्रेशन कहार ऊपर डिपेंड करूचे दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन आ गुटे जीन अछि से काना करूचे कंट्रोल करूचे आ गुटे जीन रो एक्सप्रेशन के दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन बोली कि क्वाइसी एंड जीन इंटरेक्शन रो गुटे एग्जांपल भी न अछि दैट इज एपिस्टासिस okay so epistasis may be the correct answer he pare but you know kichi example nahi dei kichi mane question directly epistasis super question na ase satile ka मैं epistasis के right ne do you know कहला जे one gene रो expression ता other gene रो expression ऊपर और सतर एक्सप्रेशन ता सतर द्वारा इन्फ्लुएंस होचे बलिकरी कोइचे बलिकरी मैं जीन इंटरेक्शन लखोछु एंड जीन इंटरेक्शन रो गुड एग्जांपल होचे काना दैट इज योर एपिस्टासिस Next question which type of genetic disorder is caused by the addition or deletion of a small number of nucleotides देखो last class रे का पढ़िते नै तर बाबद रे genetic disorder caused by addition or deletion of a small number of nucleotides रो addition or deletion होचे nucleotides रो addition होचे या फिर deletion होचे due to addition or deletion of any nucleotides in the normal DNA sequence that may lead to frame shift mutation ताकि कोई काम बोली करी frame shift mutation बोली करी कहा जाए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन
What is the term for the phenomenon where the expression of a gene is influenced by the sex of the individual? जदि sex ऊपर depend करूचे सेता expression काना हेबा गोटे gene रो expression that is related to the sex of the individual. Okay, ताके कहै से काम बोले sex influence inheritance बोली कहै से. Okay, that is called as sex influence inheritance, that is influenced by the sex of the individual. जैसे कि baldness जो देखमा baldness that is जहाँ हमर देखबार के मिलसी मेल केस रे, that is not जहाँ सिन देखबार के नहीं मिले केनो फीमेल केस रे, रेयर कंडीशन रे फीमेल केस रे देखबार के मिलसी, बट मेल केस रे होमोजाइगस कंडीशन रे भी देखबार के मिलसी, हेटेरोजाइगस कंडीशन रे भी देखबार के मिलसी. सो दैट द baldness is influenced by the sex of the individual. Next, which chromosomal abnormality is characterized by the presence of an extra chromosome 21? जदि 21 नंबर क्रोमोसोम गोटे एक्स्ट्रा थिबा तो केन टाइप रो एबनॉर्मालिटी देख पार के मिलसी ताके कहै छै डाउन सिंड्रोम. ओके, हमें पढितला ऑलरेडी जेंडा के डाउन सिंड्रोम बाबत रे डिस्कस करतला इन उपलेडी पल्ला टाइम रे. In which phenomenon is the expression of a gene influenced by the factor outside the DNA sequence? DNA sequence के छाड़ी करी बाहरर किछि फैक्टर जदि इन्फ्लुएंस करूचे एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन, that is called as what? Epigenetics. That means environment outside the DNA that will influence the expression of the gene. ताके कहै छै epigenetics. Okay, question number 30, that is the last question. What is the term for the situation where one gene marks the expression of another gene? गोटे जीन जदि आ गोटे जीन रो एक्सप्रेशन के मार्क्स करूचे ताके कहै छै एपिस्टासिस बोली करी कहै जाय छै. Okay, so I think you all enjoyed this session. If any doubt, you can write in the comment section, or for more updates you can join our WhatsApp or Telegram channel. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.